बताइए क्या क्या हम लोग पढ़े थे। अच्छी हो गई आप? अच्छी हो गई हैं? So I think in previous class we talked about a kind of a structure, and that structure is what? A kind of data structure. And name of data structure is heap. So we are going to learn heap data kind of data structure having some condition. What is the condition? It's kind of and then some parent node contains values which should be or equal to children value. Or not? So here parent node contains value which should be larger or smaller. If it is larger, it means it is known as max. If it is smaller, then it is known as mean. So it is a kind of data structure. So now it is a question that if we have array, then how can we understand an array is a structure? In array, we can find relation. We can find relation between index so that we can perform parent and child relation. Clear? Index for parent and child relation or not. So for ith index, left child at for ith we already discussed this problem or not. So for ith index, where is left child? 2 into I plus 1, 2 into I plus 1, and it is for left index or not. What about right index? 2 into I plus 2. What about parent index? Yes. Parent index at I minus. So let me understand. I don't understand. Okay. Let me understand if we have any array having some elements. See here. Index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If we assume this array is a kind of tree, then let it is 8, 2, 9, 6, 11, 12, 4, 21, and then 7. So 8 is in root, then it is 2, 9. 2, 9, then 6, 11, 12, 4, 21, and 7. In this case, it is your root node. It is index 1, index 2, index 3, index 4, index 5, index 6, index 7, and index 8 or not. In this case, tell me for any ith index, let it is index 2.
Where is child node? So for index 2, it is 9, index 2. Child node at 5 and 6. So 2 into 2 plus 1, and here 2 into 2 plus 2. What about parent of 5 at 2 and parent of 6 at 2? So how can we find a relation? I minus 1 by 2. So what we can say here, I minus 1 upon 2 or not? Try to check it. आपको आ रहा है समझ में? क्लास की थी कुछ कुछ? Okay. So normally heap is a data structure which is a kind of tree. There are many types of tree, but it is a kind of tree here. And it is a question, if we have any array, then how can you find relationship between array and tree? So we can assume it is a kind of relation to find parent-child relationship in array. So now it is a question that how can we design heap? हीप कैसे बनाएंगे? मान ली अगर ये अरे हो, तो इस अरे को हीप कैसे बनाएंगे? एक आइडिया है. What is the idea? So if you want to design, parent node should be larger. Parent node should contain, parent node contains values which should be larger than or equal to children values. If parent node should contain larger value, then how can we design? One method is what? Try to apply any sorting method. If we apply any sorting method to sort this one in descending order, sort this array in descending order, then largest value will be here or not? Then this largest value is, you can compare with any index, anyhow it is larger. Now if we have another larger number in this place, so we are going to compare in this side only. It means we can compare 2 into I plus 1 index or 2 into I plus 2 index. Even you can compare with any other index from right hand side. It becomes what? Larger or not? Clear? So when you sort this array in descending order, then you will get heap or not? So first idea is what? Try to sort in descending order. We will get heap data structure. We will get heap data structure. Yes, max heap. So right here, there are many ideas. There are many ideas to design max heap. To design max heap. Idea 1. Idea 1. ये हम प्रीवियस क्लास में कुछ कुछ पढ़ा दिए थे. अब थोड़ा शुरू कर रहे हैं काम. ठीक. Idea 1. Sort given array in descending order. क्या इससे हो जाएगा? सोफिया, हो जाएगा? So tell me, what is the time complexity if we sort array in descending order? So till now we learned one sorting method. The name of that sorting method is merge sort. Right now, time complexity of merge sort is n log n. So now we can say in worst case, it may take n log n time to sort any array or not. So right here, we can apply merge sort. We can apply merge sort for
this purpose, which may take how much time? Theta and log n time in worst case. So tell me, we learned some method like selection sort, then bubble, then insertion, then quick, and then merge. In these four methods, worst case time complexity of sorting is what? N square. And in this case, what is the worst case time complexity? N log n. It means it is something better. So it takes n log n. But these four methods are not out of place. These four methods are not out of place sorting. Not out of place means what? In place. कुछ याद है? In place sorting. In place sorting means what? Yes. In place sorting का मतलब क्या है? आप बताइए. क्या? बोल के आप बताइए. सबसे पहले बताए थे स्टेबल सॉर्टिंग. हाँ, आप बताए आनंद. ऋषिकेश को पूछते हैं, अभी आए. What is in place sorting? एक होता है ना स्टेबल सॉर्टिंग, कंपैरिजन सॉर्टिंग, इन प्लेस सॉर्टिंग, डाटा सेंसिटिव सॉर्टिंग, लिखा है कुछ. हाँ. So tell me what is in place sorting? आ गया? हाँ, यानी कि क्या करें? These four sorting method is what? In place sorting. That is, there is no extra space required for these sorting methods, or not. But when we apply merge sort, it requires some extra space, or not. In merge sort, in merge operation, we need one extra array, or not. So in merge operation of merge sort, it requires some extra array. That extra array is what? Space complexity. So it requires extra space. So we can say it is not in place sort. So it is out of place sort. These are in place sort because of it does not need any extra space. Clear? One or two variables are required. That is normal. So it means if you want to decrease time, then we need to increase space. That is normal way to say, but it is not necessary to say. So in merge sort, if someone may ask you what is the difference between merge sort and quick sort, then what we can say? Yeah. So both are recursion, no problem. Both may take some space, no problem. But merge sort takes theta n space, and quick sort does not take more space. Then we can say in worst case time complexity of these two are what? It is n square and it is n log n. Best case of quick sort? Best case of quick sort? n log n. Very good. देख रहे हैं? n log n. And best case of merge sort? n log n. इसका हर केस में n log n होता है. Now tell me whether these two are data sensitive sort or not. Data sensitive? Do you know what is data sensitive? हाँ, ऐसे कोई पूछ दिया कि whether it is data sensitive or not, आप क्या कहेंगे? सर लिखाए थे एक दिन data sensitive. क्या था? पढ़ के तो आए हैं मगर
यस, डाटा सेंसिटिव मीन्स क्या हुआ कि अगर आपको अच्छे दिन है तो अच्छे दिन कहिए और खराब दिन है तो खराब दिन कहिए। यानी कि जैसा अगर आ रहे हैं सॉर्टेड आ रहे हैं कम टाइम लगाए, या जैसे भी कुछ में कम लगाए कुछ में ज्यादा लगाए, ठीक है। ये नहीं कि हर केस में बराबर लगाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा सेंसिटिव मीन्स क्विक सॉर्ट, वेदर क्विक सॉर्ट इज डाटा सेंसिटिव और नॉट। Very good. So best case and worst case are different. So it is data sensitive, and merge sort is not data sensitive. यानी कोई आपको कल बोल दिया, आप ये दो चार वर्ड बोलेंगे, सामने वाले को आया सर ने तो बहुत खुश होगा, नहीं आया तभी कोई बात नहीं। समझिए कि ऐसे ही होता है ना, भैंस का आगे बीन बजाना, आगे बीन बजा दी, ठीक है, आ रहा है। और बहुत कुछ है बोलने के लिए। So first idea is what we can apply sorting in descending order, so it can sort in descending order, which may take n log n time. Second idea is what? Right here, idea 2. There are many ideas. I'm not going to tell you that only 2 or 3 ideas. Idea 2. Assume only one element in, assume only one element in, only one element in heap. Only one element in heap, and we can insert all elements one by one, and we can insert all elements one by one, all elements one by one, such that after insertion of every element, after insertion of every element, we need to maintain heap data structure. We need to maintain heap data structure. See, what is the second idea? We need to maintain heap data structure. So now, if we have this array, first element is what? 8. So when 2 comes, we assume that we need to insert 2. So it can compare with parent. So if it is ith index, then tell me where is index of parent? I minus 1 upon 2. It means that you know how to compare, from which location you can compare or not. It means you can write here if or something to compare. If it is larger, then you can swap. If it is not larger, then stop or not. Clear? After this one, you need to insert next element, that is 9. Clear? So when 9 will come, it is index at 2. So you can find it is I. So you can check whether this element is larger than parent value or not. So you know I is 2, so you can find I minus 1 upon 2. I minus 1 upon 2 means 0. 0 means you can compare with this index or not. So if this value is larger, then you can swap it. So after swap, it becomes what? 8. Now it is 9. So when I was here, you can change I is here because of 9 will be here. So further, you cannot compare. It means if I is at 0, you can stop. Clear? Next time, you can insert next element, that is 6. And tell me index of 6 is? Index of 6 is 3. So 0, 1, 2, and 3. So let it is your ith index. If it is your ith index, then how can you compare with parent? You need to find index of parent. So let j is what? I minus 1 upon 2 or not. So I is 3. So 3 minus 1. 3 minus 1. 2 upon 2 is 1. So it is what? J. So I points to a location where new element is here, and J is what? Parent of that element. Whether you can swap or not. 6 and it is what? 2.
Now try to change I is at J. Clear? And again try to perform same operation. I minus 1 upon 2 is what location of parent of this element or not? Because 6 is here. क्या करेंगे? 1 minus 1 upon 2. J यहाँ बैठा, ये जा सकता है नहीं, जाएगा स्टॉप हो जाएगा. क्लियर? ओके. अगेन ट्राई टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट 11 and index is what? 4. It means if you are talking about insert, so in insert we have one array A and integer index or no? If it is your ith index, then how can you insert? देखे थे कुछ? हाँ, तो प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ाए थे, उसको देखे थे क्या? अगर ith इंडेक्स है तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ट्राई टू फाइंड पेरेंट इंडेक्स. हाउ कैन यू फाइंड पेरेंट इंडेक्स? So J equal to I minus 1 upon 2. So it is index of parent. And now try to compare. A of I is larger than A of J. A of I, so parent is what? 4 minus 1. 4 minus 1, 3 upon 2 is what? 1. So J is here or not? So first it may compare with I and J, whether A of I is greater than A of J. A of I is greater than A of J. Yes means swap it. Clear? So swap. How to perform swap? Just write swap. हम भी कम जोड़ कम नहीं. ठीक है, देख रहे हैं 3 लाइन का कोड है, नहीं लिखते हम. After this one, after swap, what we can do? Try to set I is at this location. So now 6 is here, 11 is here. Further we need to check. क्या ये ऊपर जा सकता है? ठीक है, तो क्या होगा? I equal to J. So I equal to J. तो I कहां जाएगा? यहां पे जाएगा. इसके बाद हम क्या करते हैं? यानी इसी को फिर से रिपीट करेंगे यानी कि ये जो लिखा हुआ इसी को फिर से रिपीट कर दे ना. यहाँ क्या सेंस है? why we can stop when I reach to 0. I reach कर गया 0 तो हम नहीं चलेंगे, क्यों? फर्दर इसका पेरेंट नहीं, ये ना. so when I क्या नाम है? I greater than 0 or not? इक्वल टू नहीं चलना है क्या? मिटा ही देते हैं सब कमेंट. ठीक, इसके स्टॉप एक दूसरे कंडीशन करेंगे, ऐसा कंडीशन जो हर जगह फिट हो जाए. क्या कंडीशन होगा? कि इफ A of I greater than A of J. So see, if A of I is greater than A of J, तो क्या करें? सब करें, इसको एक बार और चलाते हैं बिना कंडीशन का. अरे सर, बिना कंडीशन का एक बार और चलाते हैं. So J is what? 0. A of I is greater than A of J. Yes, तो क्या होगा? स्वैप 11 9 और इसके बाद हमारे स्टॉप कर देते इसी तरह. Tell me next element is what? 12. Now it is I and it is your J. फिर से कंपेयर किया, यहाँ क्या आया? 12. It is 8. फिर से कंपेयर करेगा, यहाँ क्या आएगा? 11 and 12. Now next element is 4. See here, it is a special case. 4. So it is index 5 and 6. So I is at 6. So it can compare. J is what? This one. G ये है ना? तो हमें कब रोकना चाहिए? अगर मान लीजिए A of I अगर बड़ा नहीं है A of J से, हम क्या करें? A of I अगर बड़ा नहीं A of J से, हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे.
यानी कि रुकने का 2 केस, स्टॉपिंग केस इज व्हाट 2, इफ दिस एलिमेंट इज नॉट लार्जर देन दिस वन देन वी कैन स्टॉप। क्यों? अगर ये इससे बड़ा नहीं तो आगे फर्दर चेक नहीं कर सकता, ऊपर और बड़ा है क्या स्टॉप कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट केस। सेकंड केस इज व्हाट, इफ आई रीच टू 0 और नॉट। आ रहा है यहाँ क्लियर? कोडिंग कुछ जैसे चाहे वैसे लिखें, जितने स्टूडेंट उतना तरीका। फॉल्स, राइट यू हैव ब्रेक। When this condition is false, then we can break. Break का मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू को तोड़ेगा कि नहीं, बाहर निकला। अब देखिए कि एक नया एलिमेंट कोई बड़ा है, आगे है 21, क्लियर? इस केस में टूट जाएगा। Now it is 21, so we have not written any case to stop when it reaches to root or not. Still it is written. देखिए ये I है, ये J, ये आराम से होगा ना, चलता रहेगा। 221, I यहाँ आया, J यहाँ जाएगा ना, ये बड़ा है, यस 21 एंड 9, I यहाँ आया और J यहाँ जाएगा ना, अभी भी बड़ा है, क्या होगा ये 21 12। अब क्या होगा, I इक्वल टू, क्लियर? अब ये दोबारा चलेगा ना, चलेगा कि नहीं? J is what, I minus 1 upon 2, I is what 0, if I is 0 it means, now tell me, try to find this value, I क्या है 0, तरीका देखा, J निकालेंगे ना, 0 minus 1 minus 1 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 क्या होता है, प्रोग्रामिंग कभी किए? माइनस 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है कंप्यूटर में, सी में, हाँ तो क्या निकलेगा, इंटीजर है ना वो सब, 0 निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका J क्या निकल गया 0 और I क्या है 0, I J दोनों एक ही जगह पर बैठा। अब I J दोनों एक जगह बैठा, अब आएगा कोई भी एलिमेंट अपने आप से बड़ा होता है नहीं, तो क्या हो जाएगा ब्रेक। इसका अगर जो रूट पहुंच भी गया, एक ऐसा केस जो कि हम उसको ब्रेक करवा देंगे। आ रहा है समझ में कुछ कुछ? इसलिए कि कोडिंग जो है ना टेंशन की चीज नहीं होती, टेंशन होती है सोचना, क्लियर? सो दिस कंडीशन विल बी फॉल्स ऑब्वियसली व्हेन I reach to 0, ऑटोमेटिक J भी 0 होगा और बाहर निकल जाएगा। सो इट इज योर idea. So after insertion of 2, okay 21, what is next element? 7. So I is here and we need to find J. J यहाँ होगा ना, क्या चेक करेंगे, J इज व्हाट, निकल गया, इंडेक्स क्या इसका 7 8, 8 minus 1 upon 2 क्या देगा 3 हो जाएगा J। A of I greater than A of J, no else means break, सही है? ये आपका क्या बन गया, नाउ इट इज योर अरे, न्यू अरे इज व्हाट, योर न्यू अरे इज 21 12 11 9 6 8 4 2 and 7. So tell me if you are going to write index in that case whether it can satisfy this condition or not. If you are going to write index or see your parent node contains value which should be larger than or equal to children values, clear? What is the meaning? It is they know parent and child, we assume there is parent child relationship in array on the basis of indexing, clear? They know any tree, ये जो है ना ये जो ट्री है ये इसे कहते हैं हाथी का दांत दिखाने के लिए, खाने का अलग होता है, कौन सा है खाने वाला, नहीं ये अरे हम सब काम किए, ट्रिम किए, कोई भी काम ट्रिम किए नहीं किए, बस ट्री को दिखाए हैं, दिखाने से क्या लगता है सचमुच में हो रहा है, मगर सब काम कहाँ हो रहा है 2 into I plus 1 ये सब है ना अरे में हो रहा है, ये सिर्फ दिखाने का चीज है, एक्चुअल काम कहाँ है अरे में।
So it was 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Whether it's sorted or not? No. Why? It is not sorted. And also, heap data structure cannot say or cannot claim that it turns any array into sorted form. It is not necessary. So heap is a data structure which can maintain some information. That's it. Clear? So now you can here then how can we design heap? Heap by insert. We have integer one array a and integer n. We can iterate a loop I equal to 1, I less than n, I plus plus, and we can call insert. Insert a and here I index. That's it. क्या ये एक सिंगल इंसर्ट क्या ये सिंगल इंसर्ट इसमें हम कर क्या रहे हैं इस इंसर्ट हम इस कॉल कहां से करेंगे इंडेक्स 1 के लिए फिर इंडेक्स 2 के लिए इंडेक्स 3 4 5 होगा आ रहा समझ में दिस इंसर्ट इज व्हाट सिंगल इंसर्शन दिस इंसर्ट इज व्हाट सिंगल इंसर्शन and our target is what our target is to insert all elements means what we assume that first element is heap or not and then insert all elements one by one such that after insertion of each element heap must be maintained or not तो हम क्या किए heap का insertion एक बना लिए इसमें क्या कॉल कर दिए insert यानी इस कोड को आप इसके अंदर भी लिख सकते थे मगर हम थोड़ा सा अलग करके दिखाएं Yes, first in element is what? Index 1. Why? हम assume कि index 0 is what? Already heap. जब दुनिया में एक ही पर्सन हो ना जैसे सबसे अच्छा मान ले कि बच्चा निकालना है पूरा दुनिया में एक ही बच्चा हो तो क्या होगा वही सबसे अच्छा होगा दूसरा आएगा तब टक्कर होगा समझ रहे अगर एक ही एलिमेंट है तो क्या सही है सेकेंड के लिए हम बात करेंगे क्लियर सो वी कैन स्टार्ट इंडेक्स फ्रॉम 1 to n-1 so after insertion of every element okay it should maintain a kind of heap so it is kind of idea this is the case Ara so I think we discussed this idea in previous class or not and I told you let you think or write program आप लोग दोनों में से कुछ किए कुछ नहीं ठीक है उठे करे हो गया तो अच्छी So we need to think about what is the time complexity of one insert. If we are able to find time complexity of one insert, it means that we can think about an insert. Clear? So right here. So yes, tell me if someone may ask you what is देख रहे आनंद से पूछ रहे what is heap in algorithm क्या कहेंगे heap क्या कैसे डिफाइन करें हाँ ठीक है कुछ तो अब किसी चीज का डेफिनेशन पूरा का पूरा नहीं बता सकते ऐसा है कि आप पूरा बता दे डेफिनेशन किसी चीज का उस बुक में लिखा हुआ शायद कुछ कुछ होगा ना अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ओएस में अगर पढ़े होंगे तो 2-3 पेज लिखा होगा एग्जामिनेशन में आधा लिख पाते हैं बस थोड़ा सा लिख पाते हैं थोड़ा सा ही बताना ओके
So in many cases, there is one question first here so that we can understand time complexity. Question is what? Find minimum and maximum number of elements in heap. In binary heap of height h. Clear? So in this case, it is kind of binary heap. It means all elements are available left to right in every level. And last level may contain some elements which is filled from left to right or not. ये हमेशा हर लेवल में फुल होगा आप यहां से नीचे नहीं आ सकते जब तक इसको फुल नहीं करें. क्यों? ये अरे से 1 by 1 ले रहे हैं ना. ये 1 by 1 फिल होता है ना. So if someone may tell you height of this or any tree is h, then tell me what is the minimum and maximum value, number of elements. तो पहले हम जानना चाहते हैं कि do you know what is height first? So let there is one tree, any tree. I'm not telling you whether is it heap or not. Someone may tell you what is the height of this node. This case, tell me height of this node. इधर कुछ अंदाजा आप लगाइए. आप क्या कर रहे थे? 0. Yes, height of this node is 0. क्लियर? देख लेते और कोई बोर्ड नहीं क्या? आप भी चेंज कर लेते हैं सबके साथ. कभी नहीं. 0. क्लियर? Tell me what is the height of this node? 2. इसलिए पहले पूछ रहे हाइट आता है कि नहीं तो बस पढ़े कुछ से कुछ हाइट आता ही ना. हाँ, वेरी गुड. बहुत अच्छे. डेफिनेशन इज नॉट मेमोराइज. सो लेट यू राइट डेफिनेशन ऑफ हाइट. अब जो दिखाएंगे वो होगा कि कुछ और होगा? वो तो कहीं कुछ अपने मन का भ्रम है. अब डेफिनेशन लिख लेंगे, फ्यूचर में काम आएगा तब नहीं भूलेंगे. लिखेंगे. हमें भी कुछ नहीं आता था. ठीक है. डाटा स्ट्रक्चर किताब नहीं होता है. छोटे थे ना, हमें कुछ नहीं आता है. डाटा स्ट्रक्चर हीप क्या होता है, सब कुछ नहीं था. सच में कहते हैं. जब बीसीए किए ना उसमें पढ़ना पड़ा तब हम जाने अच्छा हाइट इसे कहते हैं. ऐसे समझते हैं हाइट का मतलब लेंथ ब्रेथ नहीं होता. आ रहा समझ में? हाँ वही तो. हमें कोई नहीं आता है. ठीक है, नहीं आता है, पढ़ेंगे तो आ जाएगा. आपको भी नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, पढ़ेंगे और आ जाएगा, मगर भूलेंगे नहीं. ये कंडीशन है. लिखेंगे height of a tree, sorry, height of a node means maximum number of edges. It means maximum number of edges from given node to अब बताए अपने मन से क्या लीफ नोड. अब हम जानते कि ये हम लिखाएं क्या? ये लिखा हुआ था. अब हमें ये नहीं कहेंगे कि सर क्या बात हुआ. जो भी कहना जाकर बुक को बोलिए. ठीक है. ये हाइट क्या डेफिनेशन क्यों है? अब बताइए इस नोड का हाइट क्या होगा? तो यहां से कितनी एजेज हैं लीफ नोड तक जाने का? 0.
यहां से इस नोड से कितने एजेज हैं लीफ नोड तक जाने का? मैक्सिमम। मैक्सिमम की बात है, मिनिमम में 1 भी आ जाएगा। क्या लिखे? मैक्सिमम। सो मैक्सिमम ऑफ एजेज फ्रॉम दिस नोड टू लीफ नोड इज व्हाट? 2. So height of this node is 2. So tell me height of root node is what? लिखेंगे आगे क्या? हाँ, तो डेफिनेशन पढ़ना होता है, डेफिनेशन भूल गए हम। ये नहीं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स नहीं लिखे हैं इन लीफ नोड, ये लिखे मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज। क्या लिखे? अच्छा, हम ठीक से लिखा है नहीं, गलत लिखा है। क्या लिखे? हाँ ठीक है, तो इन वन पाथ लिख लेंगे, क्लियर हो जाएगा ना। इससे क्या मेनी पाथ देख रहे, इसमें क्या वन पाथ कर देंगे तो वन पाथ से क्या एक ही पाथ में देखना है ना। देखिए तो कितना अच्छा समझदार है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम गिवन नोड टू लीफ नोड इन वन पाथ। एक पाथ बताइए कितने नोड दिख रहा है मैक्सिमम? जैसे मान लीजिए यहां से इस नोड से, मान लीजिए इस नोड से तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इस पाथ पर। अब इस नोड का बताया थे, इस नोड का क्या होगा? चलिए लिखेंगे अब हाइट ऑफ ए ट्री। हाइट ऑफ ए ट्री, हाइट ऑफ ए नोड बोल पूछा तो बता देंगे। हाइट ऑफ ट्री इज व्हाट? वेरी गुड, हाइट ऑफ रूट नोड। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू हाइट ऑफ रूट नोड। ठीक है, कोई पूछे ट्री का हाइट क्या होता है, क्या बोलेंगे? व्हाट वर द हाइट ऑफ रूट नोड। क्लियर? सो आई थिंक यू गॉट सम आइडिया। दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू कॉर्मेन। अगर दूसरा बुक पढ़ते हैं उसमें कुछ और लिखा हो सकता है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ठीक है, कॉर्मेन जो लिखा है वो हम बताएं। मान लीजिए आप लोग कोई बुक पढ़े हो, ठीक है, जैसे कभी कभी लिखा रहेगा इस नोड का हाइट 1, इस नोड का हाइट 2, इस नोड का हाइट 3 और इस नोड का हाइट 4। ऐसा भी होता है लिखा हुआ। ठीक है, वो कहते हैं कि एजेस नहीं करेंगे, नंबर ऑफ नोड्स लिखेंगे। कितने नोड हैं लीफ नोड तक जाने के लिए मैक्सिमम?